लास्ट लेक्चर जो था वो था डॉट प्रोडक्ट, और आज हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स। इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात की, इसके बाद आज हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा या जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा। हमने डॉट प्रोडक्ट में देख लिया टू वेक्टर्स ए एंड बी, उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट है। द रिजल्टेंट पार्ट विल बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इनटू कोसाइन ऑफ थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। और हमें पता है कि जो पूरा पार्ट जो आंसर निकल रहा है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी टेक इट एज स्केलर प्रोडक्ट आल्सो। बट the situation in cross product is different. If we have two vectors, say suppose A and another vector B, and we write cross product like this, the two vectors contain the cross product, then what is the resultant part? The resultant part will be equal to mod of A and mod of B, and here instead of cos we have sin theta. This gives the magnitude part. और हम बता रहे हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये पार्ट तो मैग्नीट्यूड दे रहा है हमें, तो यहां हमें मल्टीपल करना पड़ता है एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर दैट गिव्स द डायरेक्शन पार्ट। तो ये डायरेक्शन पार्ट हमें देता है और ये मैग्नीट्यूड पार्ट देता है। द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट मेथड और वेक्टर प्रोडक्ट, the resultant part is also a vector quantity. उसका magnitude part ये होता है और उसकी direction part ये होती है, n cap. So n cap here represents the direction part. अब when we talk in case of this Cartesian coordinate system, then easily you can find the direction part of n cap. n cap आपका डिसाइड करेगा कि किस साइड्स में होगा, x एक्सिस में होगा, y एक्सिस में होगा या z एक्सिस में होगा। N can have value either I or J or K, or it can be any vector quantity. It can be suppose any vector quantity AI plus BJ plus CK, but the magnitude of that vector quantity will be equal to 1 because it's a unit vector. This unit vector shows the direction part of this magnitude. This is the resultant part. तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपका जो मैग्नीट्यूड पार्ट निकलता है और ये n कैप निकलता है। n cap is a unit vector. It can be either I, it can be either J, it can be either K, or it can be any vector. But the condition is the magnitude of that very vector will be equal to 1 because it's a unit vector. So cross product और dot product में यही फर्क है। The cross product is known as also scalar product because the magnitude part is a scalar quantity, while as the cross product, the magnitude part is a vector quantity. So the vector quantity possesses a magnitude as well as direction. Now, how to find out the direction and what are the ways to find out direction, और direction किस side में होगा? Suppose if it's a vector A and this is cross product B, then you know this is mod of A and mod of B into angle of sin theta into n cap. जो n cap की direction है, you can take it like this. If this is A and this is suppose B, this vector A, this vector B, and this is a plane formed by A and B. The n cap will be along this. This will be the A cross B. This will be direction of A cross B. That will be perpendicular to the plane formed by A and B. यानी कि दो वेक्टर होंगे हमारे पास, उनका जो प्लेन होगा, जिस प्लेन में वो वेक्टर दो होंगे, उस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट पार्ट होगा। उसका वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड पार्ट, वो आप निकाल सकते हैं इस प्रोपोर्शन से। और जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा। यानी कि अगर मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यहां ले रहा हूं, x, दिस इज y, दिस इज z, यहां से यूनिट वेक्टर i है, यहां से यूनिट वेक्टर j है एंड यहां से यूनिट वेक्टर k है। तो ऑब्वियसली यहां x, y एंड z के प्लेन्स है आपके पास। You have 3 different planes. Suppose you're like this. You have x
This represents x, this represents y, this is z. So you can see this xy plane, x, y, z. This xy plane, this is yz plane, this is xz plane. You have three planes here. Although it's a more planes, but for simplicity, in order to convince the direction part, we take this 3D coordinate system. This is x, y, and z. This is xy plane. This is yz plane. This is zx plane. If the vector is along this, along x, say suppose I, and along j, then the k is the perpendicular. So the vector, if it is along I, j, then k is the direction part, because k is perpendicular. These are perpendicular to one another. So if you have a vector along I and k, or if you have a vector along j and k, this is vector along the j, another vector is along the k, the plane is this yz plane, then the vector resultant part will be along the I. If you have a k along z axis, it is I. If the vector is in this plane, this zx plane, then you have a direction this g. इसका मतलब है I और j में जो वेक्टर होगा, I और j जो रिप्रेजेंट वेक्टर करेगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो z की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा. j और y जो वेक्टर प्रेजेंट करेगा, उनकी जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो I की तरफ होगा. सिमिलरली I दिस k एंड x या z एंड x या आप k एंड I जो वेक्टर होगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा. यानी कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में जिस प्लेन पे दो वेक्टर होंगे, जो रिजल्टेंट पार्ट होगा वो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा. अगर एक्स वाई प्लेन पे वेक्टर दो होंगे तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट यहां से होगा. अगर वाई जेड प्लेन पे होंगे तो रिजल्टेंट यहां से होगा. अगर जेड एक्स प्लेन पे होंगे तो रिजल्टेंट यहां से होगा. दिस इज द डायरेक्शन पार्ट. यू कैन कैलकुलेट or you can write in terms of, if you have an along the vector along the I and j, your direction along k. So n cap will be represented by k cap. If you have a j and k, तो आपका I जो होगा आपका डायरेक्शन पार्ट होगा that will be along the I. So n cap will be replaced by I. If you have a vector along k and I, then it will result in g. तो आपका डायरेक्शन जो n cap होगा that will be g. So suppose sometimes it can be in your space, then you have a value ai plus bj plus ck. But the magnitude of that very vector will be equal to 1 because that will be representing only the direction part, the unit vector part. But here is a condition that whether you are moving from plane from A to B or B to A, because in case of rotational motion, you have two directions, either going upwards or going downwards. So the direction is to be taken into consideration whether the vectors are moving from in clockwise or anti-clockwise. Then according to that in taking that sense, you can calculate the direction part. This vector cross product is mostly used in rotational motion because it gives the direction part, the perpendicular plane of that plane जहां से आप दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So this is a three these suppose space where you are showing vectors I, j and k. This a cross b is equal to mod of a mod of b into sine of theta. अगर आपको डायरेक्शन पार्ट निकालनी होगी सिर्फ, you can write, if suppose a and b is perpendicular, a is perpendicular to b, then obviously theta is equal to 90 degree. You can write a cross b is equal to mod of a into mod of b into sine 90 is 1. You get n cap. So n cap is equal to a cross b divided by mod of a into mod of b. Now how to find the a cross b? This is the point now. So from this very formula, n cap is equal to a cross b divided by mod of a mod of b. You can calculate the direction part when two vectors are at 90 degree. If it's not having an angle between the two vectors 90 degree, then you can write n cap is equal to a cross b divided by mod of a and mod of b into sine theta. Because here I took sine theta equal to 90 degree, that sine 90 becomes 1, but it's not necessary that you can have always a 90 degree. So angle, if the angle is different, you can take a sine 90. This is the formula to calculate the direction part. अगर आपको कहीं दो वेक्टर दिए होंगे, you are supposed to calculate the direction part of the resultant.
then you can use this formula. N cap is equal to A cross B divided by mod of A mod of B angle 90. So you have to find out here how to find out A cross B. अब A cross B का वैल्यू कैसे ढूंढना है? डायरेक्शन पार्ट ढूंढने के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट सिर्फ एक स्केलर प्रोडक्ट है जो आपको सिर्फ स्केलर वैल्यू देता है। अगर आपको डायरेक्शन पार्ट देखना होगा, कहीं डायरेक्शन पार्ट कैलकुलेट करना होगा, टेक इट फॉर ग्रांटेड, आपको थीटा दिया होगा, आपको ए क्रॉस बी ढूंढना है, मॉड ऑफ ए बी निकाल सकते हो, मॉड ऑफ बी निकाल सकते हो, आप डायरेक्शन पार्ट ढूंढ सकते हैं। बट द कंडीशन इज यू आर सपोज टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको डायरेक्शन पार्ट चाहिए। व्हाइल एज इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट that is helpful to find out the theta between the two vectors. So यहाँ पे भी अगर आपको n cap दिया हुआ है, it's also helpful to find out the direction part, but the dot product is taken more simple to find out the direction part. Now ये तो था डायरेक्शन पार्ट का। अब हमें ढूंढना है कि a क्रॉस b हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज या a क्रॉस b के कुछ स्पेशल केसेस है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू साइन theta into n cap. So if ये theta is 0 degree, it is ये different है डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट अगर थीटा 0 है तो दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। a क्रॉस b comes out to be equal to, ऑब्वियसली आपका मॉड कितना होगा साइन 0 is 0 डिग्री, तो ये जो a मॉड इंटू मॉड b becomes 0 into n cap, so your a cross b is equal to 0 degree. Sorry, is equal to 0. Sorry, degree not is equal to 0. So the two vectors, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, two vectors are parallel to one another, और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा that is equal to a क्रॉस b is equal to 0. यानी कि आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हैं कि the cross product between same two vectors a cross a between two equal vectors, the cross product is always equal to 0. It is counter to that one, that a dot a between the two same vectors is maximum, that's a square. So a cross a between the two vectors, same vectors, is always equal to 0, while the dot product between the same two vectors is also maximum. Now second case, if you take theta is equal to 90 degree, so you can get sine 90 is 1, so a cross b comes out to be equal to mod of a into mod of b into sine 90 into n cap. So you get mod of a into mod of b. So a cross b is maximum when the theta between the two vectors is 90 degree. Counter to that, a dot b between the two vectors having 90 degree is equal to 0. तो यहाँ पे ये उल्टा चलता है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के मामले में। Your dot product is maximum between the two same vectors, while the cross product between the same vectors is equal to 0. Although the cross product between the two vectors having 90 degree angle is the maximum, while the dot product between the two vectors having 90 degree is equal to 0. So if theta is 180 degree, now if theta is 180 degree, then a cross b comes out to be equal to mod of a into mod of b into sine 180 degree, and sine 180 degree is also 0, so a cross b is equal to 0. So the cross product between anti-parallel vectors is also equal to 0. So cross product between two parallel vectors is also equal to 0. यानी कि वेक्टर्स जो दो पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल एब्सोल्युटली 0 होगा। बिटवीन सेम टू वेक्टर्स योर क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, व्हेयरएज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द सेम टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम। And when the angle between the two vectors is 90, your cross product is maximum, whereas the dot product is equal to 0. कहीं भी अननोन वैल्यू ढूंढना होगा तो आप डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपका अगर 90 डिग्री एंगल होगा दो वेक्टर्स के दरमियान, यू टेक देयर दिस मैग्नीट्यूड पार्ट, उनका समीशन आप करें तो वो 0 के बराबर होगा, देन यू कैन कैलकुलेट अननोन नंबर। तो सिमिलरली द क्रॉस प्रोडक्ट का ये जो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, you can put down them and you can remember it for numerical purposes. Now after that we'll go different to find out the a cross b. How to find a cross b? How to find a cross b? A cross b कैसे हम सॉल्व करेंगे? So a is equal to, here suppose a vector is equal to, I take a xi, x1i
plus y1j plus z1k, and b vector is equal to x2i plus y2j plus z2k. How to find the magnitude part and how to find the resultant part? So there are two ways. Either I can directly multiply them. A cross b is equal to x1i plus y1j plus z1k cross x2i plus y2j plus z2k. Now before going to multiply them, let us discuss how to multiply I and j, I and k. Except dot product, we have seen that I dot I is equal to 1, j dot j is equal to 1, and k dot k comes out to be equal. Now what about I cross j? So I cross j is, as you know, if you have two vectors, this three dimensional, it's I, and the vector is moving along the I. So what will be the I cross I? Magnitude of I1 into magnitude of I1 into angle between that I and I is sine 0 degree into n cap. Sine 0 is 0, is 1 into 0 becomes equal to 0. So I cross I is equal to 0. As I told, the cross product between same two vectors is always equal to 0, while as a dot product between same two vectors is equal to 1. Similarly, your j cross j comes out to be 1 into sine 0 degree into n cap. Sine 0 is 0, whole becomes 0, so j cross j becomes equal to 0, and similarly k cross k comes out to be equal to 0. So we conclude that I cross I is equal to j cross j is equal to k cross k, all are equal to 0. With the cross product between same two vectors having the same direction, the cross product is always 0, while the dot product between the same two vectors having same direction is equal to 1. So wherever you find the I cross I, you put equal to 0. और जब आप डॉट प्रोडक्ट में करते हो I dot I, that's equal to maximum, that's 1. But I cross I is equal to 0. Now what about here I cross G? Now what about I cross G? So I cross G equal to mod of I, that's 1, into mod of G, that is 1, into sine 90 degree, because I and J are orthogonal. Sine 90 into n cap. So I cross G comes out to be 1 into 1, and sine 90 is 1 into n cap. Now I cross G is equal to 1 into 1, that's n cap. Now you have to find out the n cap. I told you early that the vector is along the I and J. I and J, vector is along I and J. तो ये जो प्लेन बन गया एक्स वाई प्लेन, इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो डायरेक्शन होगी आई क्रॉस जे की, दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग के. सो आई एन कैप के बदले आप लिखेंगे दैट आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के कैप, because k is a perpendicular to the plane of I and J. Similarly, your j cross k, there's mod of this one, mod of k1 into j और k के दरमियान जो एंगल होगा दोनों ऑर्थोगोनल है, 9 डिग्री है, sin 90 डिग्री into n cap. You can write j cross k is equal to 1 into sin 90 is 1 into n cap. So j cross k becomes equal to n cap. So j and k कौन सा प्लेन होगा? j and k will be this plane, j along y axis, k along this plane, और इसका जो perpendicular, that is I. So you can write n cap j cross k comes out to be equal to I. Similarly, what about k cross I? K cross I will be equal to mod of k, that's 1, mod of this I, this 1 into sin 90 degree into n cap. So k
cross I will be equal to 1 into 1 into 1 into n cap, that's equal to n cap. So k cross I is equal to n cap, and k cross I is this vector 3, this k cross I, this I j k, now this k cross I, this, और इस plane पे जो perpendicular, that is this vector, that's along G. So this will be k cross I will be equal to G. So we conclude that I cross G is equal to K, J cross K equal to I, K cross I equal to G, unit vector. But when you move from J to K, you are moving, if you are moving like this, if you are moving from I to J, J to K, K to I, you are moving like this, clockwise. If you move anti-clockwise from I to K, then becomes minus J. If you move from K to I, that's minus I along this direction. If you move from J to I, that's minus K, because it's a 3 coordinate minus axis also. This is positive coordinates 3, this I, this is J, this is K. You have a minus J, minus I, and this is minus K. So from I to J, you have a plus K. From J to K, you have a plus I. And from K to I, you have a plus J. But if you move now anti-clockwise, you move this anti-clockwise, now if you move the clock, if you IJK, if you move clockwise. Now if you move the anti-clockwise from I to K, that is minus J along this direction. If you move from K to J, it is minus I. If you from J to I, there's minus K downwards. So you have to remember it that you are moving clockwise or anti-clockwise. So rotational motion has two directions depending upon आप कैसे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट को. If you are moving like this clockwise, then it go up. If you are moving like anti-clockwise, then it goes down. Like आप screw देख लो. Like according to using the screw rule, you can find out the direction, or your thumb rule. Simply, if you are moving from I to J, going up, J to K, slightly similarly, you can take the value of I, J and K depending upon आपकी डायरेक्शन पार्ट कहां से जा रहा है और आपका वेक्टर किस प्लेन में फंस रहा है. I to J, you have a K, I to J, you have a K. If you are moving from I to J, if you are moving J to K, you are moving I. If you are moving K to I, you have a J part. So you can use the thumb rule also, you can do the screw rule also to find the direction part. But simply you remember it that if you have to first choose which in which plane your two vectors are falling, then the perpendicular to that plane gives you the direction part. So similarly, you can use the I cross J is equal to K, J cross K is equal to I, K cross I is equal to J. If you move now J cross I, that is equal to minus K. If you use a K cross J, that's equal to minus I. If you move cross I cross K, that is equal to minus J. So you have to remember these three important things. So I cross J didn't come out equal to J cross I. यहाँ ये बराबर नहीं आए because यहाँ minus times आ गया. So they are not equal. Hence, if it is A cross B is not equal to then B cross A, because यहाँ पे minus आ जाएगा. Suppose I के बदले A लिया मैंने, J के बदले B लिया, it's not equal to J cross I. यहाँ minus जरूरी है. J cross is equal to minus K, I cross J is equal to plus K. So this indicates A cross B is not equal to B cross A. Hence, it is not obeying commutative law. Commutative law ये obey नहीं कर रहा है. Vectors फील्ड के फील्ड के लिए, किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए, किसी भी मैथमेटिकल कोई भी मैथमेटिक्स का जब आप कोई चैप्टर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको 12 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने होते हैं. लेकिन वेक्टर्स एक कम्यूटेटिव लॉ अंडर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता है. बाकी ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी,
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और इसका इनवर्स, सारे प्रॉपर्टीज स्पेस के लिए, ये वेक्टर स्पेस बनने के लिए सारी प्रॉपर्टीज ओबे करता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ को नहीं करता है, क्योंकि आपका जो डायरेक्शन पार्ट होगा क्लॉकवाइज में आपकी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में आपकी डायरेक्शन अलग होगी और क्लॉकवाइज में आपकी डायरेक्शन अलग होगी। क्लॉकवाइज में आपकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन आपकी अपवर्ड हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर आई जी एंड की। सो ये आप याद रखें कि कम्यूटेटिव लॉ इन केस ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट होल्ड। तो ये है आई क्रॉस बी, इसी के बेस पे हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या हो सकता है। नाउ if A is equal to x1i plus y1j plus z1k and B is equal to x2i plus y2j plus z2k, what will be the A cross B? तो ए क्रॉस बी, इसके दो तरीके हैं, या हम सीधे ही मल्टीपल करते हैं जैसे हम डॉट प्रोडक्ट मल्टीपल, या हम डिटरमिनेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। डिटरमिनेंट मेथड ऐसे हैं, डिटरमिनेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। डिटरमिनेंट मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी हम डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी इज लाइक दिस, हम रखते हैं मॉड, ऐसे बनाते हैं। फिर ए आई जे के कॉमन है, हम तीन एक्सिस के यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। आई जे की आपको याद रखना पड़ेगा, हम आई जे के लिखते हैं। एक हम डिटरमिनेंट मेथड कैसा है, ए क्रॉस बी, ए लिखा हमने, आई जे के लिखा। उसके बाद ए की जो आई के सामने वैल्यू है, वाई के सामने वैल्यू है, जेड के सामने, दैट इज x1 y1 z1 इज लाइक क्यूमर्स रूल में हम इस्तेमाल करते हैं। x2 करेंगे x2 y2 एंड z2, यानी कि आपको आई जे के लिखना है, आपके 3 यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। देन आपको आई के सामने जो पहले वेक्टर का वैल्यू लिखना है और जे के सामने जो पहले वेक्टर का वैल्यू है के के सामने। सिमिलरली इसके बाद दूसरे रो में, यानी कि 3 रो आपके बनेंगे। पहला रो जो होगा वो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस का होगा, दूसरे में आपके वैल्यूज होंगे कोएफिशिएंट्स के, 2 वेक्टर्स के कोएफिशिएंट्स के। तो आप फिर बाद में ए क्रॉस बी कैसे निकाल सकते हैं, यू कैन राइट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई टाइम्स, ये लाइन और ये लाइन ड्रॉप हो जाती है, y1 स्क्रीमर्स रूल माइनस z1 y2, फर्स्ट इज प्लस देन माइनस j इंटू ये लाइन और ये लाइन ड्रॉप करनी है, x1 z2 माइनस x2 z1 एंड प्लस थर्ड इज प्लस ये और ये लाइन ड्रॉप करनी है, x1 y2 माइनस x2 y1। सिंपल। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू y1 z2 माइनस z1 y2 टाइम्स i। मोस्टली बुक्स जो है ना यहाँ से कॉमन निकालते हैं माइनस को, ये जब माइनस कॉमन निकलेगा, बनेगा प्लस। तो यहाँ पे अंदर जो बचेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला, ये प्लस बन गया x2 z1, अब ये माइनस आएगा x1 z2 टाइम्स j प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 टाइम्स k। ये आपके पास आ गई फॉर्मूला। अब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस में आएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ y1 z2 माइनस z1 y2 स्क्वायर प्लस x2 z1 माइनस x1 z2 स्क्वायर प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 स्क्वायर। ये आ गया इसका मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये कहता मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ तो ये वेक्टर था, ये आपको वेक्टर मिलेगा, फिर इसको मॉड करके आपको मिलेगा। ये डिटरमिनेंट रूल है। नाउ वी हैव अनदर मेथड दैट वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई। सो ए क्रॉस
B is equal to A cross B is equal to A is equal to x1I plus y1j plus z1k cross x2I plus y2j plus z2k। तो अब सीधे जो आपने अभी मेथड इस्तेमाल किया है ए क्रॉस बी आप निकाल सकते हैं, मल्टीपल के सीधे x1 इंटू x2 आई क्रॉस आई एट द नो आई क्रॉस आई सेम वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 प्लस x1 इंटू y2 आई क्रॉस जे इज की कैप that to calculate just similarly then x1 plus x1 into z2 I cross k, that's I cross k is k cross I is plus 1, I cross k you are moving opposite direction, then I cross k is minus g cap. Now multiply by y1 into y2 y1 into y2 y1 into x2 first y1 into x2 j cross I cross j k है j cross I उल्टा दैट्स माइनस k प्लस y1 into y2 j cross j becomes 0 and y1 into z2 j cross k is I plus I, and similarly you go z1 into x2, that's z1 into x2 k cross I is plus I plus z1 into y2 k cross g is minus I, and you have lost z1 into z2 k cross k comes out to be equal to, you have all diagonal elements equal to 0. In case of dot product your diagonal elements are the actual values, but in case of cross product your non-diagonal off diagonal elements are the exact values, but in case of dot product your diagonal values and a trace of this matrix you can say in other words becomes the exact values. So you have write यहाँ k अब k की हमें ढूंढना है कहाँ पे है, this one and this one is k, so you can write first I is y1 this comes out to be equal to y1 z2 I यहाँ पे भी है and I y1 z2 you can write y1 z2 j cross k, that's I z1 x2 k cross I that's equal to g, and z1 y2 that is k cross g that is minus I, so you can write y1 z2 यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाहर, z1 y2 कॉमन आ जाएगा I. सिमिलर यू कैन राइट नाउ जे वाले आप लिखें, जे वाले कौन कौन सा आपके पास है, z1 x2 प्लस z1 x2 यहाँ भी जे है यहाँ भी जे है माइनस ये कॉमन बाहर निकालो x1 z2 टाइम्स के जे, और लास्ट में क्या आ जाएगा के टाइम्स जो आपको के बचेगा दैट इज x1 y2 के किसमें है लास्ट में माइनस के यहाँ पे है दैट इज माइनस ये बाहर निकालो माइनस y1 x2 टाइम्स ये के इसमें भी है कि इसमें भी कॉमन आ जाएगा और माइनस बाहर निकाला हमने, ये देखिए आप ये आपका बच गया ए क्रॉस बी, सो ए क्रॉस बी comes out to be equal to same as this one y1 z2 minus z1 y2 times I z1 x2 minus x1 z2 times g and x1 y2 minus x2 y1 times k, and mod of a is same as this. So this is a determinant method and this is direct multiplication by knowing the I, j and k. This is how you can find the cross product, and you can also find the cross product after finding the cross product what will the direction part, that is a cross b
is equal to mod of A and mod of B into sine theta n cap. So we can write this instead of in this IJK. In next lecture, we will go through the numerical part. Thank you very much.